Hello friends, I am Premendra Bhausa. Today I am going to share you that I have started already the Easy Ink channel, which is completely devoted to the English language, and it is giving easy and effective ideas to learn this language. So friends, आज से यही चैनल हम हिंदी के साथ शुरू कर रहे हैं. इट मीन्स दैट लर्न इंग्लिश थ्रू हिंदी. So with this language we are going to discuss more and more about English language. हमें आज से इस सेशन से जो कुछ भी इंग्लिश के बारे में सीखना है, इंग्लिश के बारे में जानना है, वो हम इन दोनों भाषाओं के साथ जानने की कोशिश करेंगे. Let us introduce me first that I am Premendra. I have experience of more than 24 plus years in this English teaching and learning process. So I have also worked as a chief tutor at District Center for English, and I have also gone through the training at English and Foreign Language University, Hyderabad. There I got a very good guidance from P. Mohanraj Paul Gunasekhara. He is also a very good and eminent personality as far as Advanced Learners Dictionary is concerned, because he is working there as a counselor. P. Raju was there, Maya Pandit was there, Jayden Patil sir was there, Kshema Jose, Gracie, and all eminent personalities in English language who have given guidance more than 25 countries throughout the world. And we got a very good opportunity to have a dialogue with them and to learn from them a lot of things. और उसी के बेस पर आज हम ये जो चैनल चला रहे हैं, इसके माध्यम से आपको इंग्लिश के बारे में हमने जो कुछ भी हासिल किया है उसके बारे में हम आपसे इस चैनल के माध्यम से शेयर करना चाहते हैं. So friends, along with there I have a number of friends with me, जैसे कि पूरी Shashikant Puri was there, Sultan Sheikh was there, Nitin was there, and number of very good friends from all different parts of the states. Also Mr. Karvande sir from SIEM also helped me a lot. And on the basis of these and all the friends which are working in the same field, that is in English, they have supported a lot, and on the basis of that we are going to share these different ideas related with the English language. आज हम इस सेशन में इंग्लिश लैंग्वेज what is mean by a language, लैंग्वेज क्या होती है, भाषा क्या होती है, वो जानने की कोशिश करेंगे. हमारे मन में जो कुछ भी भाव है, भावनाएं हैं, उनको प्रकट करने का जो माध्यम होता है उसे हम भाषा कहते हैं. What are the emotions, feelings there are in our minds, all those expressed in the form of something, and that something is nothing but the language. और दोस्तों, लैंग्वेज जो होती है वो 4 बेसिक स्किल्स के बलबूते पर खड़ी होती है. Each and every language is based on 4 basic skills. So what are those? That is LSRW simply. That is meant by listening, speaking, reading and writing. So in this channel you are going to work on these different 4 basic skills. That is, first we are going to go in detail with the first skill, that is listening. So why listening? Listening पहला स्किल क्यों है? So friends, यह जो स्किल है ये सबसे पहला हमें अवगत होने वाला स्किल है. सबसे पहले इस स्किल को हमको हासिल करना है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैन गो टूवर्ड्स द स्पीकिंग स्किल एंड द नेक्स्ट स्किल्स. Because right from the beginning, that is when we are in the womb of mother, at that time also we are going to listen something. सबसे पहले हम भाषा को सुनने की कोशिश करते हैं और उसके बाद उसको स्पीक आउट करने की कोशिश करते हैं. So today we are going to start this session with listening skill. So what is mean by that listening?
So listening is a skill, and in this skill we are going to focus about different aspects. What are sub skills of that listening skill? All these things what we are going to consider in sessions. So listening is the first skill, and what is mean by listening? Listening is nothing but it is a process. Listening is a process of trying to know what the speaker is saying. जो कुछ भी सामने वाले ने कहा है उसको जानने की कोशिश करना, उसको समझने की कोशिश करना और उसको रिप्लाई देने के लिए खुद को तैयार करने की जो प्रोसेस है वही प्रोसेस लिसनिंग कहलाती है। तो लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग के बेस के ऊपर ही हम आगे का जो एक बड़ा टारगेट है दैट इज़ कम्युनिकेशन और दैट कन्वर्सेशन विल डेफिनेटली गोइंग टू अचीव। तो ये 4 बेसिक स्किल्स के माध्यम से हम इस कॉन्वर्सेशन या कम्युनिकेशन स्किल पर अपना प्रभुत्व जमा सकते हैं। सो ये पहला स्किल लिसनिंग, इसके बारे में आने वाले सेशंस में अलग अलग एक्टिविटीज़ होगी, अलग अलग टास्क मैं आपको दूंगा और उसको आपको पूरा करके कमेंट बॉक्स में भेजना है। सो फ्रेंड्स, definitely you are going to enjoy all these upcoming activities and tasks. So let us hope that you are going to watch each and every session till end. So with this hope and with a lot of different excitations, we are going to meet in the next session, which is completely devoted for the listening skill. So till then, have a good bye.